Okay. Conservation of angular momentum. We studied about angular momentum. So we have to study about conservation of angular momentum. Okay. Analogy say we can get the conservation of angular momentum. We know conservation of momentum, बहुत famous है ना. Conservation of momentum का formula क्या था? Like when, what is the condition? What condition में the conservation of linear momentum is happening? Tell me. When we have to apply conservation of momentum? बोलो माना. ui plus ki equals to uf plus. No, that is conservation of mechanical energy. Conservation of momentum, gun wala. This is applying a force on this is applying a force on this. Action, reaction pair cancel out each other. External force is zero. That is the condition. When external force is zero, so linear say, what is the formula? F is equal to dp by dt, rate of change of momentum. If external force is zero, then क्या होगा? We can apply dp is equal to 0. That means initial momentum is equal to final momentum. In terms of differentiation form में लिख रहे हैं. We can write in delta also, right? So dp by dt वगैरह हो गया. Now compare with rotation में, tell me. F के जगह में टॉर्क आएगा, मोमेंटम की जगह में एंगुलर मोमेंटम dl by dt. Now if external torque is 0, then क्या होगा? dl is equal to 0. That means initial angular momentum is equal to final angular momentum. The conservation of momentum. So whenever torque about that point is 0, then colors use the happily initial momentum, angular momentum equal final angular momentum. And initial angular momentum का formula आ गया ना, क्या है? I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. This is for system you have to apply. Okay, this is also for system I have to. Okay, I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. This is the formula we have to use for conservation of angular momentum. When we have to apply only when external torque is 0. मतलब वो लोग नहीं मेंशन करेगा, ऐसा नहीं कि टॉर्क मतलब मोमेंटम में एनी टाइम दे मेंशन लाइक गन का प्रॉब्लम्स में वी आर यूजिंग मोमेंटम. ऐसे एंगुलर मोमेंटम यू शुड हैबिचुएट. Wherever external torque about that point is 0, we can apply conservation of momentum about that point only. About that point only, it is we have to apply conservation of angular momentum. है ना? यस. चलो ना क्वेश्चन करो, ये तो मालूम है आपको. चलो न्यूमेरिकल करो. हाँ. A round disk of moment of inertia I2 about the axis perpendicular to the plane and passing through the center is placed over another disk of moment of inertia I rotating with angular velocity omega. ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा लर्न कर लो. सपोज मान लो there is a disk is rotating about this axis. तो क्या बोला? A round disk of moment of inertia I2. इसका moment of inertia is I2 about the axis is perpendicular to the plane and passing through the center. Okay, is placed over another disk of moment of inertia I1. Another disk is there. ये disk है दोनों. Moment of inertia इसका I1 है. Moment of inertia I1 rotating with angular. ये rotate हो रहा है. Angular velocity omega. घूमता जा रहा है. एक तो normal है, नहीं rotate हो रहा. Just एक disk है and इसका moment इसका angular velocity is omega. Okay, about the same axis. Find the angular velocity of the combination of disk. मैं क्या किया? हाँ. चलो. हाँ. मैं क्या किया? ये I1 by I1 plus I2. हाँ. I1 W by I1 plus I2. Yeah, I1 omega by I1 plus I2. Where formula है क्या? No, sir. For the combined part, it will be I1 plus I2 into omega final, right? Yes. देखो, when I put in the combined form, omega will change or not? Omega will change. I call it as omega dash.
about this axis will change, and moment of inertia will be I1 plus I2. दोनों moment of inertia. हाँ. Now देखो, I applied on that such a way that the torque acting is zero. Torque acting is zero at that point. Okay, there is no other force, right? Torque about that point is zero. So torque is zero means apply initial angular momentum equal to final angular momentum. Always. So whenever this type of questions comes, आपको initial angular momentum equal to final angular momentum apply करो, फिर से apply करो. Initial angular momentum equal to final angular momentum. Initially a body rest में ये वाला first one, इसका moment of inertia zero plus इसका moment of inertia क्या होगा? I1 ओमेगा is equal to इसका moment of inertia कितना? I1 plus I2 times omega dash. खत्म. Omega dash is equal to I1 omega 1 omega by omega I1 plus I2. So torque about that point, about that axis is zero. Okay. Chalo, next. Two discs of same moment of inertia rotating about the axis, passing through the center and perpendicular to plane of the disc of angular velocity omega 1 omega 2. Okay. They are brought in contact face to face, coinciding with the acceleration, the expression of loss of energy during the process. Okay. So क्या हो रहा है? Now ये डिस्क भी घूम रहा है, ये डिस्क भी घूम रहा है, दोनों डिस्क मैं एक के ऊपर एक रखा. So क्या होगा? Some energy is getting lost, some energy lost. वो कितना एनर्जी लॉस हुआ बोल के उसका डायरेक्ट फॉर्मूला डालेंगे. वो फॉर्मूला लर्न कर लो. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल सबट्रैक्ट करने का. ओके. वो प्रोसेस करके बड़ा है. फाइनली शॉर्टकट फॉर्मूला है रिमेंबर करने का. लॉस ऑफ एनर्जी लिखो. आई पुट ऑल द फॉर्मूला शीट में. लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, याद है किसका फॉर्मूला? ऑफ I1 I2 by I1 plus I2 into omega 1 minus omega 2 whole square. This is the formula. आपको लर्न करना पड़ेगा. हाफ I1 I2 by I1 plus I2 into omega 1 minus omega 2. जनरली कैसे आएगा ये वाला? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल सॉल्व करके. I1 and I1 plus I2 be in brackets. I1 I2 ब्रैकेट ये मल्टीप्लिकेशन. No sir, I1 plus I2. दिस वन यू वांट. I1 plus I2 डिनोमिनेटर में एक ही है. 2 times of, right? Yeah, when you multiply it into 2, so won't it be in 2 I1 2 plus times 2 of I1 I2 दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Okay. Okay. हाफ बाहर. So in this case में apply करो no formula. Both I1 I2 are same, right? I only substitute. What will get answer? In this case में I1 is equal to I2 is equal to I. Substitute in the formula and tell the answer. Loss of energy कितना हुआ? सर हाफ I1 square, half I1 square by 4I by omega 1 minus omega 2. I1 square होगा but I cancel हो जाएगा ना इधर. So I by 4 omega 1 square minus omega 2. I by 4 into omega 1 minus omega 2 whole square. Because I into I square 2I. I एक I cancel हो जाएगा. 1 by 2 बचेगा. So I by 2 बचेगा, I by 4 होगा. So omega 1 minus omega. This is the loss of energy. So loss of energy formula आपको बैठ करना पड़ेगा. Half I1 I2 by 1 plus I2 into omega 1 minus omega 2 whole square. आता है? चलो. ये करो. ट्राई करो. A thin circular ring of mass m and radius r is rotating in a horizontal plane about the axis. एक ring है rotating about the axis. Okay, ring है of radius r and mass m. Okay, about the axis vertical plane with the constant angular velocity omega. Omega से rotate हो रहा है. Zoom. If two objects each of mass small m is attached gently in the opposite ends of the diameter of the ring. मैं क्या किया? इस रिंग को घूमता जा रहा है अच्छे से. Happily it is घूमिंग. घूमता जा रहे समय he placed small m mass here and small m mass here on the ring में अटैच किया. उसका करने से the ring will rotate with an angular velocity so much.
ये वाला एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ना, सो डेफिनेटली इसका एंगुलर वेलोसिटी विल चेंज ओमेगा डैश. ही इज टेलिंग टू फाइंड ओमेगा डैश. फाइंड करो. टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट इज 0. एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम लगाओ. सब्स्टिट्यूट करके टेल आंसर. So it's mr square by 2, right? Which mr कौन सा रिंग का mr स्क्वायर? Oh. रिंग इज mr स्क्वायर. Sir, हम्म. M omega by 2 small m. नीचे और भी है. No, sir. हाँ? Sir, there is nothing else. Torque about this point is 0. माना बोलो. Torque is 0. One That means second. initial angular momentum equal to final angular momentum. So I got the initial angular momentum as mr square omega. mr square omega is equal to इसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना है? mr स्क्वायर mr square प्लस इसका क्या होगा? mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर. 2mr square. नो Where does the mr square again come from? हाँ, ये रिंग है ना, रिंग तो घूमता जा रहा है ना. सी इनिशियली रिंग इज रोटेटिंग, उसके ऊपर 2 मास रखा, सो आपको रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वे टू ऐड एंड मासेस का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वे टू ऐड. Oh, the masses are also ring shape. हाँ, masses small point mass, small point mass का फॉर्मूला क्या है? टेल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला याद नहीं है? देखो So you have एक to use the मास. parallel axis, right? अरे पैरेलल एक्सिस पॉइंट मास का फॉर्मूला क्या है? टेल में किसे टेल में? इधर एक मास Mass m है. into length square. हाँ खत्म. दैट ओनली mr स्क्वायर Oh, ओनली. mr square. Okay, that's हाँ why दैट we ओनली mr रिंग square. कर दिस पॉइंट मास रिंग नहीं है, mr स्क्वायर बेसिक फॉर्मूला है. नो ओमेगा डैश इज नथिंग बट mr स्क्वायर ओमेगा बाय mr स्क्वायर प्लस 2mr स्क्वायर. So then you'll get the answer as This is small m, right? so one second. This is capital R M. square, R square, R square all gone. हाँ, so कितना होगा? You'll get m omega divided by m plus m plus 2m. 2m. हाँ यस करेक्ट. तो m भूल गया कृष्णा, नीचे m plus 2m आएगा. ओमेगा डैश इज इक्वल टू m ओमेगा बाय m plus 2m. ये कंजर्वेशन मोमेंटम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा, इवन आईपी में आल्सो. I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. That means I is inversely proportional to omega. Okay, or omega is inversely proportional to I. When and the conservation of angular momentum में like I omega angular momentum is constant, right? ये बहुत काम आएगा आपको. They'll give examples also. असल स्कूल में they will make you sit about in chair में. करवाया कभी angular momentum time में? They told to sit in a chair and they rotated. देखा कभी ऐसा? So what will happen is आपको IP questions also will be there. आप ये क्या बोलते हैं, जिम का ये रहेगा ना पकड़ने वाला डंबल्स रहेगा ना. आप क्या करेगा बोले तो आप एक कुर्सी में बैठो, रोटेटिंग चेयर. ओके, आप उधर बैठो. सपोज यू आर कीपिंग योर हैंड्स वेरी फार एंड द पर्सन स्टार्ट रोटेटिंग. पर्सन को आपको रोटेट कर रहे हैं. रोटेट करने समय आप क्या करेगा? नजदीक करे तो क्या होगा? टेल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज और डिक्रीज. मोमेंट ऑफ इनर्शिया Sir, it'll पहले increase and डंबल्स you'll का move मास m faster. है. हाँ Sir, you'll move faster. It'll increase. हाँ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिक्रीज, उसके वजह से एंगुलर मोमेंटम विल इंक्रीज. सो दिस का एप्लीकेशन सो मेनी आर देयर. ये एग्जाम में पूछेगा. स्केटिंग में वो लड़की घूमती है ना स्केटिंग लगा के, वो उस टाइम में दैट ओनली उसका वो क्या करेगा? फर्स्ट हाथ ऐसा दूर में रखेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज एंड स्पीड विल डिक्रीज. एंडिंग में लास्ट में ऐसा अंदर रखेगा. अंदर रखने से क्या होगा? बॉडी को पूरा अंदर लेने से क्या होगा? इसका स्पीड विल इंक्रीज, फास्ट में घूमता जाएगा. ओके, सो दिस ऑल आर इसका एप्लीकेशंस ओनली, एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एप्लीकेशंस ओनली. इवन दे विल टेल एग. नॉर्मली दूर से मैं एग रखूंगा, एक बॉइल्ड एग रखूंगा, एक वाला नॉर्मल एग रखूंगा. आई रोटेट. ओके, हाउ यू विल आइडेंटिफाई वेदर इट इज विच एग बोल के? दूर से आप बैठा, यू विल नॉट टच, दोनों सेम वाइट ही दिखेगा.
मैं ऐसे घुमाऊंगा, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट विच इज बॉइल्ड एग विच इज नॉर्मल रॉ एग? Sir, crack it on your head, sir. हाँ, Crack it on the head, sir. नो, दूर में, विदाउट टचिंग, दूर से dissolve. When you study VSAQs in IP, then you will get dissolve things. Generally, egg खाते हो? कृष्णा, egg you will eat? Okay. Egg में normal egg में क्या होगा? The liquid, the inside yellow part है ना पूरा, everything will be there. ये boiled में कुछ भी पर tight हो गया ना, पूरा tight हो गया. Okay, when you rotate, the वो part क्या होगा? The yolk yellow part will be spread in the outward direction. The moment of inertia will increase or decrease? In the normal egg में, raw egg में, inside liquid रहेगा ना, when you rotate, the liquid part is moving far away from the axis of rotation, right? When the particles are moving far away, masses are going far away from the axis of rotation. Moment of inertia क्या होगा? Moment of inertia will increase or decrease? Increase. Increase. Moment of inertia will increase means angular velocity will be decreasing. मतलब आप रोटेट करने समय ये वाला जल्दी रुक जाएगा, ये वाला थोड़ा ज्यादा रहेगा. So by seeing we can see that okay, this is a raw egg, this is a boiled egg बोल के आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. That is also based on conservation of angular momentum. Okay, so these all are applications of conservation of angular momentum. Okay, चलो one more question करो. करो. A small mass m attached to the string rotates frictionless table top में. Okay, एक टेबल है, इधर स्मॉल होल है, ये इसको रोटेट कर रहा हूँ फर्स्ट इनिशियली. ओके, इफ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड, मैं क्या किया, नीचे से टेबल है ना, टेबल में स्मॉल होल है और रस्सी से बंधा है, ऐसे घुमा रहा हूँ, मैं रस्सी से नीचे खींच रहा हूँ, ऐसा नीचे खींच रहा हूँ. ओके, सो दैट रेडियस क्या होगा? देखो, आई स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय पुलिंग द स्ट्रिंग कॉजिंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन डिक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 2. मतलब मैं क्या किया, उसको बॉटम, दिस टेबल राइट, मैं बॉटम, ये होल है, इधर थ्रेड है, इधर मास है रोटेटिंग, तो मैं थ्रेड को नीचे है, तो क्या होगा, रेडियस विल डिक्रीज, रेडियस गॉस डिक्रीज टू मान लो r/2. ओके, देन इज सेलिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास इज हाउ मच. इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है? कैलकुलेट करो काइनेटिक एनर्जी. सो इट इज इनिशियली, इसका मास m है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v. ओके, सो मैं थोड़ा नीचे लगाने से क्या होगा, नीचे खींचने से रेडियस कम हो जाएगा ना, और इसका स्पीड विल चेंज, राइट, v डैश हो जाएगा. ओके, टेल मी टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज जीरो और नॉट? Torque about any point should be we have to calculate, right? Torque Yeah. about this point is zero. Why? Because the tension force is passing through the axis of rotation. There is no torque acting on this at the center mein, right? So torque is zero. That means net torque is zero. That means initial angular momentum is equal to final angular momentum. Now apply karo and tell the answer. Kinetic energy. Kinetic energy will be how much? पहले v dash फाइंड करो. v dash is how much? नो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं ना, ये वाला क्या है, पार्टिकल इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, राइट? सो व्हाट वी हैव द फार्मूला यू यूज, mvr. सर्कुलर मोशन में व्हाट इज द फार्मूला? एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर मोशन फार्मूला आई टोल्ड यू लास्ट क्लास में, mvr, राइट? Equals to V by R. And mvr MVR, okay. mv dash into r/2. सो एक m कैंसिल, r कैंसिल, सो v dash is equal to 2v. Now he's asking initial final kinetic energy is how much, right? Initial kinetic energy is how much? Half Can't we do like mv this? square. So can't we write I as one second. No, wait. Can't we write L as I omega and then add it as See. mr square into V by R, and then we can mr find square into omega is Second, v by r. second. सब जोड़ते हैं. Okay. Sir, why did we get MVR is equal to MV dash R/2? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है which you missed last class में. एक पार्टिकल is rotating in a circular path. What is the basic formula? Is mvr sin theta. Theta is angle between r and v. R and v का always 90 है circular motion में. So that's why Okay. sin 90 is 0, sin 90 is 1.
सो MVR आएगा, एंड इसमें MVR कितना होगा, V डैश इंटू R बाई 2. तो हाफ इज आस्किंग फाइनल काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो कितना होगा, हाफ इंटू M इंटू V स्क्वायर इज नथिंग, V डैश स्क्वायर इज नथिंग बट 2V होल स्क्वायर, दैट इज हाफ M इंटू 4V स्क्वायर. आई कैन राइट लाइक दिस, 4 बाहर आ जाएगा, हाफ MV स्क्वायर. सो इट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इतना इंक्रीज हो गया. तो मैं अंडरस्टूड? 1 second. इसके बाद ओनली रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग. ठीक है, उसका समथिंग समथिंग करके परेशान नहीं होने का. डू PYQs ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपर वे में फॉर दिस चैप्टर.